हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि ये जे एडवांस का क्वेश्चन है 2007 में पूछा हुआ फ्रॉम मैकेनिक्स सेगमेंट वी आर कंसीडरिंग राइट नाउ। सो मैकेनिक्स का ये जो क्वेश्चन है इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग यू? It is saying you that this is based on a statement 1 and a statement 2. This kind of question is not now coming, but this question is useful for you to understand the concept because the question is asked in JEE Advanced. तो जेई मेन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होगा क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ the question what it is saying you. A block of mass m starts moving on rough horizontal surface. So horizontal surface is rough. With a speed velocity v, it stops due to the friction between the blocks and the surface after moving through a certain distance. The surface is now tilted to an angle of 30 degree with the horizontal, and the same block is made to go up on the surface with the same initial velocity v. The decrease in the mechanical energy in the second situation is smaller than the decrease than that of the first situation. So this is the statement 1 what is given to you, and because reason is given to you in statement 2 that the coefficient of friction between the block and the surface decreases with increase in the angle of declination. So one by one we go through the statement 1 and 2, what statement 1 and 2 is saying to us in concept wise. Then we analyze that which option will be the correct option to give the answer of this question. So let's have a look. The first question is saying two situation that this is what it is mentioned to you, that let's suppose the horizontal surface I am considering here, and this horizontal surface is rough horizontal surface. So there is a block of mass m and which is given some initial velocity due to which this block is moving on horizontal surface, but it is getting a stop. So mu is the coefficient of friction between this block m, which is moving initially with some velocity v, and finally it got a stop. So when the finally it got a stop after traveling some distance s, here you can see. So it got this much distance traveled, and this. So what is happening here is the kinetic energy which is getting seized by the friction force which is and due to which the velocity, you can see the velocity is acting in forward direction and the friction force relatively acting in the opposite direction of the motion. So what happened? This speed will decrease and finally it will get a stop. So this stop, what the decrement in the energy will be having, this decrement in the energy due to the friction over here, the energy is getting consumed in the friction. So what we can write, what is the loss energy? This loss energy is what we can say what energy is and what energy is zero. So this initial energy minus the energy final, which is actually zero here we are having. So this leads to what we are having. This is nothing but the kinetic energy, initial kinetic energy half mv square minus zero the final kinetic energy. This is the loss in energy, what you can say, this loss initial minus the final. And this loss is what is the loss happening here? Due to the friction we are having the loss. This one. So in question asking the decrement in the mechanical energy in the second, what is the second? This is the first situation given to you. अब सेकंड सिचुएशन में क्या दिया हुआ है कि इसी जो सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसको इंक्लाइन कर दिया जाए, यानी कि ब्लॉक आ रहा है इधर से और इसको ये इंक्लाइन कर दिया जाए। तो इस केस में जो इसका यहाँ पे मान लेते हैं कि इट इज हैविंग सम वेलोसिटी v, सेम वेलोसिटी इट इज गिवन टू us, but there is some angle theta which is inclined from horizontal, it is 30 degree, this is mentioned here. तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है मोशन और ये कुछ हाइट तक जाकर के फाइनली स्टॉप हो जा रहा है. This is not so it is having some ideas, but you can see here what we can think about this. What will be the loss kinetic energy? This is what E initial we are having and what is the E final we are having. This is initial energy is kinetic energy, that is half mv square. It is the same energy what it was having in the first situation. This is the first situation I am having, and this is the second situation you can see. अब सेकंड सिचुएशन में जो फाइनल एनर्जी इसके पास होगा, यहाँ तो कुछ हाइट गेन कर गया है
क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, तो दैट मीन्स इट गेन सम हाइट, ड्यू टू गेनिंग सम हाइट इट विल बी हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी, that potential energy we have to subtract here, it is mgh. So this case what we are having this loss, you can see this E final minus E initial, what the result here will be getting delta E, and this is the second situation. And what the delta E in the first situation, in the second situation we will be having uh, second situation will be having the less decrement in the mechanical energy, you can see in this situation. So first situation is हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब मूव कर रहा है उस सिचुएशन में आपको जो लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का, और जो सेकंड सिचुएशन में लॉस हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी का, तो सेकंड सिचुएशन में क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन पे कुछ ऊपर चढ़ जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगा ये इस वैल्यू से जो होगा वो क्या होगा, दिस इज व्हाट वी हैव द लॉस इन mechanical energy in the first situation, and this is what. So whatever the kinetic energy it is having, if you assume here 10 joule, let's suppose this is just imagination I am considering here, this is 10 joule, and if suppose so in this case 10 joule of loss in the first situation, and some value of this potential which is less than the 10 value. So what is happening in the first situation, जो लॉस मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, जो सेकंड सिचुएशन है उसमें लॉस जो हो रहा है वो कम हो रहा है. तो दिस इज द स्टेटमेंट वन, it is mentioned decrease in the mechanical energy in the second situation is a smaller in the first situation. So I hope it is correct now. So statement वन जो है वो करेक्ट है आपका. अब स्टेटमेंट टू पे आते हैं, यानी कि स्टेटमेंट वन जो है ये ट्रू है, ये ट्रू है. एंड जस्ट वेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस हियर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज. सो कंटिन्यूएशन में आप देखिए जो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. क्यों ट्रू है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ये चीज हम देख चुके हैं, जो लॉस इन एनर्जी होगा मैकेनिकल एनर्जी में वो ज्यादा होगा इन द केस ऑफ सेकेंड सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जा रहा है. और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक and the surface, the coefficient of friction between the block and the surface decreases with increase in the angle of inclination. So ये चीज बोला जा रहा है कि अगर हम angle of inclination को बढ़ाते हैं तो जो coefficient of friction है between the surface will also it will also what you say here, these will decrease. The coefficient of friction between the block and the surface, it cannot increase what you can say or decrease, because this is sole the basic concept what we know that ये जो है coefficient of friction ये object surface के nature पे depend करता है, and उसके basis पे हम लोग निकालते हैं. तो यानी कि थीटा के चेंज करने से आपका म्यू वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा. So this is what you can see, the statement first what we have is true, but the statement two is not true, because म्यू वैल्यू जो है ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा म्यू वैल्यू. इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज. सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट टू है वो रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट रिजल्ट हियर. दिस इज द explanation for this question. You can see now the next question, you can see this is also based on statement and reason kind of question only. So it is asked in 2007. What is the question saying you from mechanics only? In an elastic collision between two bodies, the relative speed of the bodies after collision is equal to relative speed before collision. This is the statement one, it is given to you. This is true. We'll discuss about it, how it is. And in an elastic collision, the linear momentum of the system is conserved. This is also true, but we cannot say only in an elastic collision. Linear momentum of the system is conserved in all kind of collision, whatever the collision we are having. जितने भी तरह के collision possibility हैं, उन सारे collision में linear momentum जो है conserved होता है. यानी दोनों स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट ये है कि इलास्टिक कॉलिजन अगर हो रहा है तो बिफोर कॉलिजन जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों बॉडी के बीच का, और आफ्टर कॉलिजन जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों बीच के बॉडी के बीच का, वो जो है आपको वो इक्वल होना चाहिए.
तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर सोचा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन आएगा वो स्टेटमेंट 2 आ जाएगा आपको, कि इलास्टिक कोलिजन में, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि अगर रिलेटिव स्पीड दोनों ब्लॉक का जो इनिशियल है बिफोर कोलिजन और जो आफ्टर कोलिजन अगर ये सेम है, तो फिर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट का जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग दूसरा स्टेटमेंट बोल सकते हैं। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या कि अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को इंडिविजुअल सोचते हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में अगर लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर दिया जाए तो फिर रिलेटिव स्पीड भी क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसके बेसिस पे हम लोग मास को जो है सेपरेट कर सकते हैं, और उस केस में जो है हमारा रिलेटिव स्पीड सेम आ जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे लीड्स हो रहा है स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे लीड्स हो रहा है स्टेटमेंट 1। इट मींस दैट we can say here both statements are correct, but the second statement is not the reason for this statement 1. So statement 1 and 2, both statements are true, but statement 2 is not the correct explanation for state 1 यहाँ पे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। दिस इज फर्स्ट थिंग वी नो, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन इट विल वैलिड। Then the second thing we know that kinetic energy ये जो होगा initial वो final energy के बराबर होगा। There is no change in the energy also before collision and after collision. That is why no loss in energy in this situation. So if no loss in energy, so what the relative speed will be there in the before collision, and what the relative speed will be there after collision, it will be equal. So on the basis of these information, we can say that the option B is correct one here. I hope you understood this concept. This is very fundamental and basic concept which has been asked in 2007. Thank you for understanding and listening. Thank you.